Good morning, everyone. In today's session, we are going to see ledger account and subsidiary books. So start. Priti Sharma ji, good morning to you, beta. Okay. So first we are going to start with basic rules of accounts. Personal account, debit the debtor, credit the creditor, traditional approach. And debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Remember friends, modern approach talks about asset is equal to liability plus capital. In asset showing its debit balance, liability shows credit balance, capital is showing credit balance, asset, expenses and income. Income minus expenses will give you profit, income is credit, expenses debit and profit credit. Now you can answer all these questions if your basics are very clear, traditional approach and modern approach. Account will be very easy for you students. Good morning beta. I always told you सर्वेश ने रूल्स भेज दिए, राहुल पटेल ने रूल्स भेज दिए, बाकी स्टूडेंट्स क्यों अभी भी रूल्स नहीं भेज रहे? Yes, I request all of you, please send all rules of accounts on daily basis. Whenever there will be my session, before starting my session, please send all basic rules of accounts. In last session, I have given you some homework. Okay. What was the homework, beta? Salary payable. So we stopped at salary payable. 100 pages के notebook में था आपके. So 100 pages के notebook में you have written beta salary payable. Now salary payable, what was the answer beta? First year में 10,000 and 15,000. So this is April to September and October to March. In second year, your salary increased from 20,000, salary increased to 20,000, April to September, October to March, 25,000. And beta third year, you started with 30,000, April to September, and 35,000, October to March. So, yes, can you answer these questions, beta? What was the salary account for the first year, beta? Salary account first year के लिए क्या था? Yes, how many of you answered? I have done the homework. Very good, beta. Preeti Sharma. Salary account बताइए Preeti. For the first year. For the first year. See, now I will tell you the shortcuts. So, salary account, debit balance, credit minus, debit plus. So, by profit and loss account. Now, see, by profit and loss account. Here, we transfer what is interest, salary, which is accrued. Salary, which is accrued. So, in P&L, we will write for 10,000 into 6 months and 15,000 for 6 months. 10,000 for 6 months and 15,000 for 6 months. Okay. So your P&L ka transfer tha 60,000 plus 90,000. You will get 1,50,000. You will get 1,50,000 by P&L. First year, there will be no opening payable. There will be no opening payable because it's a first year. What is to cash? To cash, beta, you paid 10,000 full for 6 months. You paid because April ka salary you paid it in the May month, May ka June May. So 10,000 rupees you paid almost from for April to September ka. You paid in May to October. When you paid May to October. But 15,000 you paid only for 5 months. For which month? October to February. October to February. You paid it in the November to March. You paid it in November to March. October to February. You paid it in November to March. Okay, beta. Now it's very clear, beta. April to September, May to October, and October to February. You paid it in November to March. That is for 5 months. November, December, January, February, March. So, and what is payable? Your payable is for, so it is for 11 months. This is 1 month. You can match this. And this is 12 months. So payable only for March month. And payable is rupees 15,000. Okay. So you paid 1,35,000. You paid during the year 1,35,000. Friends, it's very easy.
that now you are aware of this concept. First year, how many of you got the correct answer? How many of you got the correct answer? Tell me. Tell me, beta. First year. Yes. फर्स्ट ईयर का कितने बच्चों को करेक्ट आंसर मिला? वेरी गुड. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट ईयर. यस. मैं वापस बोलता हूं, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको अकाउंटिंग का कभी डर ही नहीं लगेगा. ये लिख के रखो आज. जिसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ में आया उसको अकाउंट से कभी डरेगा नहीं. ये सिर्फ यहां तक नहीं बेटा, सीए फाइनल तक मैं आपको बता रहा हूं, इंटरमीडिएट के टॉपिक्स में भी बता रहा हूं. एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं एक्रूअल कॉन्सेप्ट को. एक्रूअल कॉन्सेप्ट को टाइम देने के पीछे रीजन एक ही है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए. वेरी गुड. जानवी बोल रही है सर, आयुष बंसल बोल रहा है, राहुल बोल रहा है, उमर बोल रहा है. वेरी गुड ओंकार, वेरी गुड बेटा. नाउ नाउ टेल मी, सेकंड ईयर का टोटल बताइए मुझे. हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव दी आंसर सेकंड ईयर का टोटल? नाउ आई वांट सेकंड ईयर का टोटल. ओके, सो हियर टोटल इज 1,50,000. सो आई विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर और नॉट. सो सेकंड ईयर का टोटल बताइए. What is the second year का total? Very good, Nikita. Yes. Madhukonda ji, very good beta. So who answered very fast? Second year का total आयुषी बोथरा ने बताया 2,90,000. बेटा इट्स रॉन्ग. विपुल कुमार 2,85,000 करेक्ट है. प्रीति शर्मा वेरी गुड बेटा, सेकंड ईयर का 2,85,000. भूमि वेरी गुड. Sadhna ji, very good beta, 2,85,000. So those students who are watching it in the recorded session, first pause the video. जो भी बच्चे ये रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो पॉज कर लीजिए और उसके बाद सेकंड ईयर का टोटल आने तक आंसर को देखना मत. और जो बच्चे लाइव में देख रहे हैं बेटा, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो करेक्ट आंसर इज 2,85,000. Correct answer is 2,85,000. So who got 2,85,000? All of them are correct beta, and you are absolutely doing well. Those who are getting second year का total 2,85,000. Please 2,90,000 जिनका आया था, प्लीज चेक योर आंसर बेटा एंड यू ओनली टेल मी वेयर यू गॉट द मिस्टेक. ओके, तो आप ही बताओ 290 किसने आंसर दिया था? 290 हमारी लाडली बेटा आयुषी ने आंसर दिया था. ओके, सो आयुषी आप एक बार चेक कीजिए क्यों आपका आंसर गलत आया है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे गलत आंसर क्यों मिला. इट्स ओके, यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस, सो डोंट वरी इफ यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, इट्स ओके. बट बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मिस्टेक. ओके, सो बाय पेबल, तो बाय पेबल पिछले साल का बेटा, पिछले साल का 15,000. इट इज फॉर 1 month. ओके, इट इज फॉर 1 month. देन बाय पी एंड एल बेटा फुल 12 मंथ. बेटा फुल 12 मंथ कितनी सैलरी है? 20,000 और 25,000. 20,000 फॉर 6 महीना एंड 25,000 फॉर बेटा 25,000 फॉर 6 मंथ. सो 20,000 6 महीने का, 20,000 6 महीने का, 25,000 into 6 memory plus memory recall 2,70,000. So I'm getting 2,70,000 to cash. Wait. Abhi 2 cash is also for 12 months. How? First I will pay this 15,000. So 15,000 for 1 month. 15,000 for 1 month I'm going to pay. Okay, then 20,000 rupees full 6 months I paid beta. Full 6 months because ये अप्रैल में पे किया, ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मई टू अक्टूबर में मैंने ये पे किया. एंड नवंबर टू मार्च दैट इज 5 months. नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 months I paid only 25,000 into 5 months. Okay, 25,000 into 5 months. And to payable बेटा it is for मार्च महीने का पेबल है. So this is payable for only 1 month. And what is the amount? 25,000. 25,000 की अमाउंट होगी. तो यहाँ पे हमारा कैश कितना है? चलो मेमोरी रिकॉल कर दो. 15,000 मेमोरी प्लस 20,000 into 6 memory plus and 25,000 into 5 memory plus. And memory recall means MRC button आपको दबाना है. So you are getting 2,60,000 my friend. So 2,60,000 to cash. And बेटा yes, अभी बताइए कि कहाँ पे बोथरा जी आप गलत हो गए थे? So 2,85,000.
It's okay that you are getting wrong answer. Nothing to worry. अभी हम लोग देखते हैं थर्ड ईयर का आंसर. ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं आप में से कितने प्रतिशत भारतीय ये थर्ड ईयर का आंसर करेक्ट देते हैं. थर्ड ईयर का आंसर हम लोग देखते हैं कितने लोग आप में से करेक्ट देते हैं. सो थर्ड ईयर, नाउ दिस इज द लास्ट ईयर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू. आई विल वेट फॉर योर आंसर. एंड करेक्ट आंसर इज ओ माई गॉड. यस बेटा आशुतोष, आपका आंसर मुझे मिल रहा है. यस, साधना जी ने करेक्ट आंसर दिया, तेजस ने करेक्ट आंसर दिया, तमन्ना ने करेक्ट आंसर दिया, आदित्य ने करेक्ट आंसर दिया. वेरी गुड, वेरी गुड. भूमि ने तो आंसर देती है. भूमि, वेरी गुड बेटा. विपुल ने भी करेक्ट आंसर दिया इस बार. करेक्ट बेटा. ओंकार है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता हूं. कोस्तु जी एसआरओ दिख रही है, तो कोस्तु जी का भी करेक्ट आंसर आया है. और यस, मेनी ऑफ प्रमोद विमोद सब करेक्ट आंसर वाले बच्चे हैं. बहुत बढ़िया बैच है, बहुत बढ़िया बैच. ओके, सो यहाँ पे थर्ड ईयर जो है वो समझ लीजिए. थर्ड ईयर में क्या होने वाला है? थर्ड ईयर में बेटा वापस से बाय पेबल. चलो बाय पेबल कितलो छे? बाय पेबल 25,000 एक महीने का. पिछले मार्च का अभी पे किया 25,000. चलो सर, यस सर, इट्स ओके. सो बाय पे एंड एल, ये बहुत इजी है. बाय पे एंड एल सर 12 मंथ्स, ये हमें आता है. हमें ना ये पी एंड एल वाला साइड हमें आता है. टू कैश में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सबको वही होता है स्टार्टिंग में. सो 30,000 फॉर 6 मंथ्स एंड 35,000 फॉर 6 मंथ्स. 30,000 फॉर 6 मंथ्स एंड 35,000 फॉर 6 मंथ्स. सर मेमोरी प्लस का फंक्शन यूज करेंगे. हाँ, सो सर मेमोरी प्लस 30,000 पहले जीरो कर दो, मेमोरी नहीं दिखनी चाहिए. 30,000 यूज नॉर्मल कैलसी बेटा, सीरीजन वाला एकदम नॉर्मल कैलसी लेके आना. सो 30,000 इंटू 6 मंथ्स. कैल्सियो का कैल्सी प्लीज ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज कैल्सी थोड़ा सा टेढ़ा है. सो 30,000 इंटू 6, मेमोरी प्लस का बटन, एम प्लस होता है ना साइड में, देखो ऐसा बटन होगा. 30,000 कैसे करने का मैं कैलसी के सिखाता हूँ. 30,000 इंटू 6 इज इक्वल टू करके एक मेमोरी प्लस का बटन है. देखो एक मेमोरी प्लस करके बटन मिला सबको. यस सर, उसी में 35,000 इंटू 6 इज इक्वल टू वो मेमोरी प्लस में डालने का. सर ये प्लस हमें याद रखना नहीं है ना सर, ये याद रखना मुश्किल होता है, तो कैल्सी अपने आप याद रखता है. ओके, सो 35,000 इंटू 6 मेमोरी प्लस. और फिर बेटा मेमोरी रिकॉल मतलब एक टाइम ये रिकॉल होता है. आर स्टैंड्स फॉर रिकॉल एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लियर. सो बेटा अकाउंटेंट जो होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते रहेंगे, कैल्सी इज योर वेपन. तो कैल्सी को बेटा चलाने को आना चाहिए बेटा. हाँ, तो मेमोरी रिकॉल एंड देन क्लियर. सो मेमोरी रिकॉल, यस बेटा, आरसी एंड क्लियर करने के बाद आपकी मेमोरी 2 बार बटन दबाना है, मतलब आपके मेमोरी में से वो हट जाएगा. सो क्लियर फ्रॉम योर मेमोरी. सो मेमोरी रिकॉल, एम रिकॉल आर. हाँ, सो 1,80,000, फिर मैं 35,000 इंटू 6 मेमोरी प्लस में डाल दिया. मेमोरी रिकॉल आई एम गेटिंग 3,90,000. सो दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ कैल्सी. हाउ टू एड एनीथिंग बिफोर मल्टीप्लीकेशन, जहां पे जो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और बाद में एडिशन कैसे करते जाना है, ये मैंने आपको सिखा दिया. Okay, sir. It's very simple. Calci shortcut, and then to cash. But first we will pay this 1 month का. ये देखो यहाँ पे जो 1 month है, ये 25,000 में पहले पे करूंगा. 1 month of 25,000 लास्ट ईयर का मार्च का अप्रैल में पे किया. We paid it in April. Then 30,000 into 6 we are going to pay from May to October. So beta April to September ka we paid it in May to October, and November से आगे March तक 5 months we paid 35,000 into 5, and beta March महीने का still payable 35,000. So what is the amount? Memory plus में 25,000 into 1 memory plus, 30,000 into 6 memory plus, and 35,000 into 5 memory plus, and you're going to receive answer of 3,80,000. So correct answer che 3,80,000, and total is 4,15,000. It's very, very simple, my friend. Yes, third year over. So this is a concept of accrual expenses payable. So this was the answer. I hope every one of you have written this in your. Yes, beta. Otherwise, you can take a screenshot. And you can finish it afterwards. So you can, yes, write it afterwards, beta. First year.
फर्स्ट ईयर का आंसर है, देन यू आर गेटिंग द आंसर सेकंड ईयर. सेकंड ईयर बेटा मोहम्मद खान, बाद में वापस वीडियो देख लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करता रहूंगा. तो आप प्लीज जो भी कैलसी का शॉर्टकट है मैंने साइड में लिख के रखा है, आप वापस से देखना. यस बेटा मोहम्मद, आपका आवाज मुझे आ रहा है, आप हिंदी में भी कमेंट्स दे सकते हो, डोंट वरी. यस, समझने के लिए हिंदी में कमेंट्स दे तो भी चलेगा, पेपर इंग्लिश में लिखना है. थर्ड ईयर यस बेटा निधि यादव, डोंट वरी. तो आप आज थर्ड ईयर तक कंप्लीट किए. यस, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन थिंग. Prepaid expenses should I give you as homework and we will check the answer in next session. Prepaid expense ka I will give you two example number 5 prepaid expenses. Then I will give you income receivable pro forma after that. So prepaid expense के लिए yes 100 pages के notebook में लिखना है ये सब. Expenses payable you have to write it in the 100 pages notebook. Now should I give you prepaid expenses to try at home? You have to think on that, or should I give you direct answer? Okay, so please tell me it in the comment section. Option 1 try at home, and we will take this answer. Option 1 try at home. I will give you example try at home, and second one I will give you answer today itself. Yes, today I will solve it. So whether you want to try it at home or today, should I solve today itself? Beta, because I want to take time for subsidiary books today, subsidiary books or trial balance के कुछ extra questions मुझे लेने हैं. Yes, try at home. Okay, everyone wants to try at home. Maximum students. प्लीज डोंट फेयर इट. बेटा फेयर मेरे साथ करना. ओके, सो फेयर मेरे साथ करना. आप लोग सिर्फ रफ पेजेस पे सॉल्व करके आना रफ पेजेस पे. सो माय फ्रेंड राइट डाउन नाउ. हेडिंग दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस. नाउ आई थिंक 3 अकाउंट्स, दोज हु हैव नॉट रिटन, यस बेटा प्लीज कीप एप्रोप्रिएट लाइंस. तो जितने भी लाइंस है जरूरी लाइंस है उतने छोड़ दीजिए. And then write prepaid expenses. Prepaid expenses. Prepaid expenses means what? Expenditure of next year. Expenditure accrued in next year, but payment is made in current year. Payment is made in current year. So you can write this prepaid expenses, expenditure of the next year. Expenditure of the next year. You paid it in the current year. You paid it in the current year. It's very simple, beta. Very simple. Expenditure of the next year. You paid it in the current year. So this is the expenditure. तो ये current year के next year के P&L में जाएगा and current year के cash में जाएगा. Current year में to cash होएगा और ये next year में by P&L होगा. So next year में by P&L होगा और current year में to cash होगा and current year में वो asset भी कहलाया जाएगा. करंट ईयर में ये एसेट भी कहलाया जाएगा. टू इफेक्ट्स क्लोजिंग एसेट कहलाया जाएगा. बेटा इस टॉपिक नहीं है ये. दिस इज नॉट अ टॉपिक, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. यस, सिंधु जी सिर्फ बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, बाकी सभी स्टूडेंट ने बोला है ऑप्शन नंबर 1. सो आई विल गो विथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन. ओके, सो प्रीपेड एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर. And day after tomorrow, I'm going to explain you this concept in detail. So don't worry. We are going to meet on Thursday. Thursday पे हम लोग मिलेंगे, तब मैं पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा. So वहां पे कॉन्सेप्ट बुक में लिखना है ये prepaid expenses. Prepaid expenses. So now I'm going to give you one example on this. Insurance premium. Insurance premium. Okay. Expenses of next year. तो next year के P&L में जाएगा. पेमेंट करंट ईयर में दिखेगा टू कैश करके. इंश्योरेंस प्रीमियम फर्स्ट ईयर में ₹24,000. CCC फर्स्ट ईयर मीन्स नो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. बट दिस इंश्योरेंस इज फ्रॉम 1st November up to 30th October. Oh sir, we paid it on 1st November till 30th October.
Okay, now you have to try this. I'm not going to tell you the answer now. Second year. Second year is rupees 36,000. 1st November to 30th October in the second year also. So very simple example. So insurance premium, my friends, first year, second year. Okay. ठीक है. So example now, please 400 पेजेस के नोटबुक में लिखो. अभी 400 पेजेस के नोटबुक में लिखो. चलो. बेटा 1 नवंबर से 30 अक्टूबर तक का है. अक्टूबर के पहले नवंबर आता है? नहीं बेटा, नवंबर से शुरू किया और हमने अक्टूबर तक का पेमेंट किया. ठीक है. नवंबर से शुरू करके ऐसा बोलते हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च. फिर आप ऐसा बोलोगे कि मार्च महीने का अप्रैल के बाद में आता है कि पहले आता है? सो हम लोग फाइनेंशियल ईयर को कैसे बोलते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. वैसे यहाँ पे मैंने 1 नवंबर टू 30 अक्टूबर ऐसा लिख के दिया है. सो ऐसा नहीं सोचने का अक्टूबर के पहले नवंबर या सॉरी नवंबर के पहले अक्टूबर आता है. ओके. चलो कोई और बात नहीं. ठीक है. नाउ यस, डोंट राइट नाउ. यस, आई विल टेल यू दिस आंसर टुमारो. तो आप जल्दी से अभी आ जाइए. बेटा निकिता बाद में, आज आंसर नहीं देगा मैं. चलो ट्रायल बैलेंस में आ जाओ फटाफट फटाफट. ट्रायल बैलेंस. यस बेटा, हमने थ्योरी लिखा क्या 100 पेजेस के नोटबुक में? हैव यू रिटन 100 पेजेस के नोटबुक में थ्योरी? हंड्रेड पेजेस के नोटबुक में थ्योरी लिखा क्या? इन लास्ट सेशन ट्रायल बैलेंस का थ्योरी. एक दो लोग बोल रहे हैं नो सर और कोई बोल रहा है यस सर. 100 पेजेस के नोटबुक में थ्योरी लिखा है क्या ट्रायल बैलेंस का? अरे आधे यस बोल रहे आधे नो बोल रहे यार. थ्योरी ऑफ ट्रायल बैलेंस हमने 100 पेजेस के नोटबुक में लिखा है या नहीं लिखा है? थ्योरी, ट्रायल बैलेंस थ्योरी. प्लीज टेल मी दोज हु आर अटेंडिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस. एंड प्रोफॉर्मा ऑलरेडी रिटर्न ना? हाँ, 3 मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस. यस, 3 मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, बस उतना ही लिखना था. ओके, सो वी हैव रिटर्न. यस, नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन. सो नवंबर 2017 का एक क्वेश्चन है. यस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन बेटा? इसका आंसर दे दीजिए फटाफट. ओके. यस बेटा, वही थ्योरी जो लिखना था. सो ट्रायल बैलेंस के 2 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक इट टुडे एंड 2 क्वेश्चंस and then we'll start with subsidiary book questions. Subsidiary book, are you finding easy or difficult one? चलो तब तक ये सॉल्व कर दो.
Yes, 5 marks question. I'm giving you exactly 3 minutes or 4 minutes. Chalo, 4 minutes. You have 4 minutes to solve this question. Now it's visible, na? So what is the balance in suspense account? Chalo, let's start. Provision for doubtful debts, beta. You have to write it on the credit side. So 250 here. See, provision always has a credit balance. Provision, because it's a debtors. What is provision, beta? It is like debtors. Debtors has debit balance. So provision has credit balance. Provision against debtor, opposite balance. So debtors ke badle mein, now what is provision for bad debts? You will understand this in detail. But when, beta, in your final accounts chapter. So remember, so this is IMP, mark as IMP. Provision for doubtful debts is a debit credit balance. Cash credit, beta, it's a loan. CC loan. Loan means liability. Loan means liability. So 1654. Capital on the correct side, trade payable on the correct side. Due from customer, correct side, beta. So it is receivable. Capital credit balance, trade payable credit, correct hai. Due from customer, debit. Discount received, wrong side, beta. It is gain. It is gain. So it has credit balance. So gain ko kaun sa balance hoga? Credit balance. And discount allowed is my loss. Loss has debit balance.
Beta drawings correct. Beta opposite of capital. Capital means introduction of amount and drawings means withdrawal. So withdrawal debit balance. Okay. So पैसा आने वाला है capital के opposite side. Office furniture debit balance. Carriage inward, outward or inward expenses. So expenses debit. So wrong. Purchase correct. Return inward means sales return. Okay. Return inward means sales return. Now sales has credit balance. So return inward, sales return has debit balance. So 330 debit. Rent and rates, expenses, debit. Salary, debit. Sales credit, correct. Inventory, debit. And provision for depreciation, wrong. Provision, credit balance. Now you can take on calci. चलो कैलसी लीजिए हाथ में. क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड 250 plus 1654 plus 4591 plus 1637 plus 252 plus 16882 plus 364. Total of credit is 25630. Total of credit is 25630. Now let's take debit ki total. 2983 plus 733 plus 1200 plus 2155 plus 829 plus 10,923 plus 330 plus 314 plus 2520 2418 24405. So difference, credit is more. So suspense on the debit side. Suspense on the debit side. So credit is more by suspense debit में आएगा 1225. 1225. Suspense को debit आएगा 1225. Okay. So I will show you the answer. 1225. You can see the answer. Yes, you can check the answer. Suspense account 1225. I will share this answer, beta. You can take a screenshot. Share करता हूं आंसर. तो करेक्ट आंसर मिल गया 1225. ओके. Correct answer is 1225. Okay. Should I give you one more question to try? Should I give you time or directly answer? चलो December 21 में आया था ये क्वेश्चन. Yes बेटा. Should I give you time or directly answer? चलो जल्दी बताओ. चलो चलो fast. These questions are already uploaded. चलो, now you have to prepare trial balance. You have to prepare trial balance. Some time सब बोल रहे टाइम दीजिए तो टाइम ले लीजिए. You have exactly
4 minutes. चलो 4 minutes. टिकटिकी जी, टिकटिकी जी आ जाइए। हाँ आ गई टिकटिकी। चलो 4 मिनट है आपके पास, 4 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा।
Okay, now please answer it. I will write credit side over here. Capital credit, discount debit. It's a loss. Carriage outward expenses, debit. Sales return. Return inward means sales return. So sales has credit, it has debit. Rent and taxes, debit. Stock, debit. Creditors, credit. Commission received, income, credit. Cash at bank, asset, debit. I think closing stock is not a part of your trial balance. It's an adjustment. So this is adjustment beta. It's only for your information. It's a 31st March. Purchases debit, carriage inward expenses debit, sales income credit, purchase return outward, purchase return, credit. Plant and machinery debit, debtors debit, investment debit, asset, cash in hand debit, motorcycle debit. Now you can take a total of credit and debit. So first we'll start with debit. So take on Calci. 1,200 plus 2,300 plus 300 plus 1,200 plus 15,500 plus 10,100 plus 36,000 plus 8,700 plus 80,700 plus 20,200 plus 3,600 plus 100 plus 34,600. 2,14,500 on the debit side. Debit side I am getting 2,14,500. Now credit side 1,40,000 plus 12,000 plus 1,800 plus 60,000 plus 700. 2,14,500 on the credit side. You can refer my answer. You can take the screenshot of answer. And value of closing stock is your presentation. Chalo. So we have finished with past examination question. और एक question है जून 2022 में आया था. जून 2022. Yes. So you are getting the answer 2,14,500. Screenshot ले लो जल्दी से. No, beta, adjustment is not correct. No suspense account in this question. No suspense account. Closing stock is an adjustment. How many of you got the correct answer, beta? How many of you got the correct answer? Still, you have to try these answers, beta. Chalo, koi baat nahi. One more question. Last question for trial balance. In this batch, we are going to take maximum questions. Check the accuracy. Chalo, now this is the last question. See, suspense account every question में आएगा जरूरी नहीं है. So now tell me, last question. June 2022. 3 मिनट है आपके पास. 3 मिनट है. 3 minutes.
Yes, I want answer. Yes, now whether suspense account is there? No, sales return is the last one, beta. Sales return is the last one. So beta, that is a tricky one now. Manish Jain. Sorry, Umar Ansari ji. Carriage inward and outward both on debit side. Yes. तो बराबर है वो. Both are expenses. चलो. So now capital credit correct है. Drawing debit बराबर है. So credit debit. Leasehold premises debit correct है. Sales correct है. Credit. Due from customer wrong. Debit side. It's a debtor बेटा. Due from मतलब पैसा receivable है. Debit. Purchases debit correct है. Purchase return credit. So wrong. 792. Loan from bank correct है. Trade expense debit correct है. Trade payable wrong 1584. Bills payable wrong 300. Salary and wages debit correct है. Cash at bank correct है. Opening debit oh 792. Rent and rates correct है. Debit and sales return debit होना चाहिए. Wrong. So 294. Let's take the total. 1692 plus 2250 plus 1590 plus 3777 plus 2100 plus 1800 plus 678 792 1389 294. So I'm getting 13,000. कुछ तो गड़बड़ हो गया. 0 678 2 and 294. What is the total, beta? Hmm. 16,362. 16,362 and 4668 plus 8250 plus 792 plus 768 plus 1584 plus 300. 16,362. No suspense account. No suspense account for this question. You can take a screenshot. Yes. Screenshot of answer you can take. Yes. So all three questions of past examination we have covered. नहीं बेटा. Leasehold premises बेटा मतलब it's a premises which is taken on long term lease. 99 years का lease होता है. So that is our asset. Very good. Very good. Rahul Patel is saying कि मुझे correct answer मिला. Very good. So बेटा we will take one short break. एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक. तो आज का सेशन सब्सिडरी बुक और कैश बुक दोनों रहेगा. चलो तो टेक अ ब्रेक. ब्रेक स्टार्ट कर दो.
चलो लेट्स स्टार्ट विथ सब्सिडरी अकाउंट्स. चलो सब्सिडरी बुक्स पे आ जाते जल्दी से. ओके गलती से इंटरमीडिएट स्क्रीन लग गया रहेगा. ठीक है कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ रहेगा. चलिए सो लेट्स स्टार्ट subsidiary books. Last day revision. I hope everyone has watched my previous sessions. चलो तो subsidiary books, tell me how many books are there. Write down in the last day revision notes. बेटा 100 pages. 100 pages के नोटबुक में लिखिए. और 100 pages book में please keep minimum 4 to 5 pages for prepaid expenses, income receivable, income received in advance. So after 4 pages, beta, after 4 pages, write down subsidiary books because I have to explain you income receivable and income received in advance. So after 4 pages, write down subsidiary books. Write down how many books are there, beta? 1 purchase book, purchase return book, sales book, sales return book, third one bills receivable book, bills payable book. Cash book, and other than this, journal proper. Total 8 books. Total 8 books. Remember, subsidiary book is alternative for journal entry. Subsidiary books is alternative for journal entry. So this is also called as primary book. Therefore, primary book. Primary book. So this is a primary book, beta. Now, write down first book, purchase book. In purchase book, credit transactions related to
goods. Credit transactions related to goods. Credit transaction of related to goods. Don't record, write down, don't record cash purchases and credit purchases other than goods. Credit purchases other than goods. Purchase book में don't record credit purchases other than goods. Don't record beta credit purchases other than goods. What is the pro forma? Pro forma, one single column and two many columns. Write down pro forma. So बेटा सब्सिडरी बुक्स में एक याद रखना, सब्सिडरी बुक्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड ओनली टू गुड्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. वी डू नॉट रिकॉर्ड कैश परचेसेस. सपोज इफ यू आर परचेसिंग इन कैश, then beta it's not possible. Okay, so purchase book is only alternative way. Okay, so single column, date, particulars, details, LF and rupees. So this is single column. So we have illustration number 1 for this. Date, particulars, details, LF, rupees. I'm giving you last day revision notes for your benefit. Many columns. Now see, date, particulars, gross amount, trade discount, net amount, freight, and total. You can write it on below this format, many columns below this format if you do not have space. Many columns, date, particulars, gross amount, trade discount, net amount, and then freight. And then freight. कौन से कॉलम्स होंगे? तो देखो, which column बेटा? Date, particulars, gross amount. Please recall this format. Trade discount, net amount, freight, and total. Single column and beta many columns. Can you write beta over in comment section after writing this format? Over beta. सर बेटा 100 ओवर करके लिखिए. कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? ओके, डन. चलो, वेरी गुड. सो बेटा प्रॉब्लम में
If freight is given in the question, then beta it is a many columns question. Otherwise, single column. See, subsidiary books is alternative. Subsidiary books is alternative. Now see, I will give you important technique. Now illustration 1 is for, yes, now you refer my previous sessions. I already told you कि आप मेरे previous sessions को refer कीजिए. To understand it more detail, we will focus in this batch on questions. Now this rupees, after 15 days, after certain interval, yes, anyone after certain interval, yes, beta. So now instead of writing many times, we will take this total. So this is a purchase book pro forma. Where to consider this beta? After certain interval. Yes, that is 15 days. 15 days or 30 days, 7 days, 3 months, 6 months. So we take this total to what? Yes, beta, can you tell me, any one of you, where to take this total? फ्रेट मतलब बेटा गुड्स लेके आना, इसका भाड़ा जो होता है उसको फ्रेट बोलते हैं. अंश वर्मा, जो हम लोग transportation cost is called as freight. Yes, any one of you after certain days? After certain days बेटा कहां पे लेना होता है? We take it to, very good, very good, purchase account. Purchase account. So from book, it is taken to purchase account. From book, it is taken to beta purchase account. Freight and net amount. See, freight and net amount. Gross amount नहीं आएगा, trade discount नहीं आएगा. Net amount is considered in purchase account and freight is considered in freight account. Total we won't consider. So after certain interval, after 15 days. So what is the benefit? Benefit is that you don't have to pass journal entry, purchase account debit to creditors every time. So instead of journal, we are maintaining this book. Okay. So after certain interval, now every one of you, you have to write it. So likho red pen se, purchase book amount is transferred to purchase account. Write down. Very, very important line. Purchase book amount is transferred to purchase account. Everyone. Purchase book की amount is transferred to purchase account. Okay, so book से जाएगा account में. Book कैसे बनेगा समझ में आया? How to prepare book, you understood? Serial number, particulars, details and rupees. Or many columns. Beta, it will help you at the time of revision. So I am giving you revision book, ready-made revision book beta. You have to write this all things in 100 pages book. Okay, so purchase book से आएगा purchase account में. Now write down purchase account. How to prepare purchase account? On 30th April, assume every month. Okay, so we started in April month.
to amount as per purchase book. To amount as per purchase book. We will write total of 30 days. Total 30 days on month end. So purchase account कब होगा? In our example on month end. Okay. So month end पे we take a total from purchase book. From purchase book. Write down. Purchase account में purchase book से amount आएगा. Very good, Preeti Sharma. Purchase book amount is transferred to purchase account. Freight. 30th April. To amount as per purchase book. Total. Or when to consider month end. Month end. To amount as per purchase book. Freight account is also updated on month end. But creditors account day wise. 4th April, 5th April, 8th April, day wise you have to write. Every time you have to write by purchases. So creditors account day wise you have to update. Okay. So whenever you are writing in, so when we are posting in purchase book, same time update creditors account. Remember. So creditors account day wise update होंगे. तो परचेस बुक में एंट्री जिस दिन करोगे उसी दिन क्रेडिटर्स भी अपडेट करना. सो परचेस बुक एंड क्रेडिटर्स. ओके. सो डे वाइज कौन कौन आएंगे? डे वाइज परचेस बुक and creditors. And then purchase book month end transfer to purchase account. So this is a summary. And no need to pass journal entry. If you are maintaining this book, so you don't have to maintain beta journal entries. So this is the option, alternative. And when subsidiary books are open, when there are large transactions. Okay, I will write over here. Large transactions. Here you can write. Primary book जहां पे लिखा है. When there are numerous transactions, you open subsidiary book. So subsidiary book is an option for journal entry. So beta, whatever you understood, please write it in the comment section. Whatever you understood till now, Hindi or English, you can write it in the comment section about subsidiary books. Write down. Yes. Whatever you understood till now, एक बार बता दीजिए और एक बार मैं हिंदी में पूरी रिवीजन ले लेता हूं आपकी.
देखो भैया, एक बार बताता हूं आप सबको कि परचेज बुक जो है, परचेज बुक, ये आपका, सॉरी, सब्सिडी बुक्स, पहले तो सब्सिडी बुक्स क्या होता है ये समझ लो, ठीक है? आप लोग पहले कमेंट लिख दो, फिर मैं रिवीजन में लेता हूँ। ओके, रिवीजन में लेता हूँ। बस वॉट एवर यू अंडरस्टूड टिल नाउ, यू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई जस्ट वांट टू चेक how many of you are writing in the proper way. Please write at least 5-6 sentences. Don't give me the answer in 2 lines. 2 लाइन्स में आंसर मत दीजिए, मिनिमम 5-6 लाइन्स प्रॉपरली लिखिए, वॉट एवर यू अंडरस्टूड टिल नाउ. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक हु इज द बेस्ट राइटर, और जो आंसर अच्छे से देता है, समरी बनाने वाले लोग. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक दो स्टूडेंट्स. चलो 2 मिनट देता हूं. ओवर. चलो लिखिए फटाफट. I hope every one of you are writing in it in the 100 pages notebook. बेटा मार्च तक हो जाएगा यश. सब्सिडरी बुक, आयुषी जैन का आंसर पढ़ रहा हूं. सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्टरनेटिव ऑफ जर्नल. वेरी गुड. इंस्टेड ऑफ जर्नल वी शुड मेंटेन सब्सिडरी बुक्स. नो बेटा, इंस्टेड ऑफ जर्नल नहीं. व्हेन देयर आर लार्ज ट्रांजैक्शंस, सो प्लीज रेक्टिफाई योर आंसर. व्हेन देयर आर लार्ज ट्रांजैक्शंस, सपोज 2-3 ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्रीज आर अप्रोप्रिएट. तो जर्नल एंट्रीज आप तब करते हो जब 2-4 ट्रांजैक्शंस है. बट सब्सिडरी बुक जब बहुत सारे, एक ही पार्टी के बाद 7 बार ट्रांजैक्शंस हो रहे, दिन भर में 5-5 6-6 बार, सो इट्स बेटर टू मेंटेन जर्नल प्रॉपर. Sorry, journal nahi, subsidiary books. Creditors account is updated on day wise. Very good. On day wise basis. On the end of the month, purchase book transferred to purchase account. Very good, beta. Total of purchase book. Total of purchase book. Aryan Kumar. Subsidiary books are alternative of journal. Very good. Maintained when firm has numerous transactions. Very good. Total of balance of subsidiary books after period time, say 15 or 30 days, transfer to their respective account. But beta, you have not mentioned when to update creditors account, जो आयुषी जैन ने मेंशन किया था. सो आर्यन कुमार, वेरी गुड आंसर बेटा. बट क्रेडिटर्स के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा. भरत चौधरी. बेटा नो बेटा, भरत चौधरी, आपके कॉन्सेप्ट्स आर 100% आपको समझा ही नहीं है. परचेज बुक इज ऑल्टरनेटिव फॉर जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज है, आपने जनरल एंट्रीज किया है. जर्नल, JOURANL. नेक्स्ट, इन द एंड ऑफ month, purchase book and creditors will transfer to, beta, absolutely wrong. Purchase book amount is transferred to purchase account and creditors account is updated day wise basis पे. So you are not 100% clear, beta. Pramod ji, purchase books are recorded only credit transaction. Very good.
Not recorded cash purchases and other than goods. Purchase book transferred to month end to purchase account and creditors is written on day wise. Now this is the best answer. प्रमोद के 100% मस्त आंसर दिया है और सबसे बढ़िया आंसर सर्वेश कोरडे ने दिया है. Subsidiary books are the alternative for journal entries. Journal entries, first point. Second point, मतलब point wise answer दिया है. When we are posting in the purchase book, we should update creditors account on the same time. Very good. There are forms of subsidiary books. Very good. Single column, many column, and credit transactions are recorded in purchase book. Nice presentation. And Sarvesh, ऐसे ही answers exam में लिखना point wise. Okay. Many students answered. Shuri ने आंसर दिया है, श्रुति ने आंसर दिया है, but I hope I cannot read all answers now. I read only जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे. तो आप लोग अच्छे से लिखना आंसर्स. एंड यस, नाउ एवरीवन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एक्सेप्ट दैट भरत बेटा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ध्यान देके सुनना. जो भी आगे की 3 मिनट्स का मैं प्रस्तावना आपको दे रहा हूं, तो अच्छे से सुन लीजिए ये प्रस्तावना कि परचेज बुक के बारे में. देखो बेटा, सब्सिडरी बुक होते हैं ऑल्टरनेटिव. एक बार हिंदी में पूरी रिवीजन ले रहा हूं. सब्सिडरी बुक मतलब प्राइमरी बुक होते हैं. पहली चीज तो ये दिमाग में रखना. सब बच्चों को लगता है सब्सिडरी मतलब ऐसे नीचे वाले कुछ तो बुक से, सेकेंडरी बुक से. नहीं बेटा, सेकेंडरी बुक मतलब लेजर होता है. प्राइमरी बुक मतलब जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक होता है. तो ये जर्नल एंट्री का ऑप्शन है. अभी सपोज सर्वेश मेरे पास आया 10-15 बार, वो बेटा दिन भर में आता है और मेरे से ट्रांजैक्शंस करता रहता है. तो सर्वेश बेटा, सर्वेश का नाम मैं कितनी बार लिखूंगा? तो मैं सर्वेश को, मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग सर्वेश का नाम, मैं क्या करता हूं, मैं जर्नल एंट्री करूंगा. परचेस टू सर्वेश, परचेस टू सर्वेश, परचेस और सेल्स को एंट्री करूंगा. सर्वेश टू सेल्स, सर्वेश टू सेल्स, सर्वेश टू सेल्स. तो ये 15-20 बार मुझे एंट्री करना दिन भर में बेटा, इतना ही काम नहीं बचा है लाइफ में. तो मैं क्या करता हूं, परचेस, मैं डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग के बारे में सोचता हूं. तो बाद में पहले जर्नल करूंगा, बाद में लेजर करूंगा. तो मैं क्या करता हूं, एक सब्सिडरी बुक बनाता हूं, सब्सिडरी बुक, परचेस बुक बनाता हूं और सर्वेश अकाउंट में डायरेक्ट लेजर एंट्री में एंट्री करता हूं. तो बेटा क्या हुआ, अभी एक समझ लीजिए. यहां पे यदि मैं जर्नल एंट्री करता हूं, जर्नल एंट्री किया तो सर्वेश टू सेल्स मतलब एक बार, 2 बार. फिर तीसरी बार मैंने डेटर्स अकाउंट ओपन किया, डेटर्स अकाउंट में लिखा टू सेल्स मतलब तीसरी बार हुआ. एंड सेल्स अकाउंट में मैंने लिखा बाय डेटर मतलब बाय सर्वेश, ये चौथी बार. मतलब मैं एक एंट्री 4 बार करता हूं, एक एंट्री 4 बार करता हूं. अभी वही मैं जब सब्सिडरी बुक बनाता हूं, व्हेन आई ओपन सब्सिडरी बुक, तो एक सेल्स बुक होगा. सेल्स बुक पे एक ही बार मेरा अमाउंट आएगा, सर्वेश ये नाम आएगा. और उसके बाद सर्वेश अकाउंट डायरेक्टली टू सेल्स, ये एक बार एंट्री हुआ और ये एक बार हुआ. और इसका टोटल मैं डायरेक्टली सेल्स अकाउंट में लूंगा. इसका टोटल सर्वेश जैसा बेटा ब्रिजेश है, महेश है, परेश है. ओके, तो सर्वेश के ये सब ऐसे ही 4-5 पार्टीज है मेरी. तो मैं डायरेक्टली आई विल टेक टू सेल्स अकाउंट आफ्टर 30 डेज. ओके, सो मेरा ट्रांजैक्शन एक ही बार होगा. सो आई सेव्ड माई टाइमिंग. मैंने मेरा टाइमिंग सेव किया 3 टाइम्स ये लिख के. ओके, मेरा टाइमिंग मैंने सेव किया, ये 3 टाइम्स का पोस्टिंग, हर बार एक एक का पोस्टिंग मेरा बच जाएगा. नाउ लिसन, देयर आर 500 ट्रांजैक्शंस मतलब 500 टाइम्स आई सेव्ड माय टाइम. ओके, तो ये होता है सब्सिडरी बुक कि परचेस बुक से परचेस अकाउंट में टोटल जाता है एंड सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में टोटल जाता है. और पार्टी का अकाउंट डे वाइज मेंटेन होता है. पार्टी का अकाउंट डे वाइज मेंटेन होता है. डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग, डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग. नाउ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. ओके, कितने बच्चों को हिंदी में ज्यादा समझ में आता है? चलो, नाउ
Same logic is for sales book. So write down beta. Next one, sales book. Same logic of purchase book. Same logic of purchase book. Write down in your last day revision notes. Yes, beta. Single creditors के बदले में you have to write, yes, beta Manish Jain, you have to write two amount as per purchase book. Yes, beta Pramod. Don't worry. Don't worry. I know South Indian students, they are having problem while we are speaking in Hindi. So it's an alien language for you. But beta, please understand, there are some students who are from rural background and they are also attending this live virtual classes from from north, east, west. And I just don't want to bifurcate this, but just telling you for some concept clarity, I'm taking revision in Hindi and my explanation is always in English. Okay. So please try to understand. Okay. Chaliye. So now let's move to next point. So sales book, same logic of purchase book. Okay. And don't worry, beta Pramod. You know, my explanation is very simple. So you will definitely understand Hindi explanation also. You are intelligent one. Okay. Sales book. After sales book, beta write down purchase return book and sales return book. Beta, in big organizations, they do not have any return policy. So instead of return, they will issue some note. Okay. For example, suppose if assume I'm Skechers के shoes आते हैं ना, और assume I'm Van Hussein. I sold you one shirt. Okay. एक शर्ट आपको मैंने बेचा. Now after beta 2-3 days, after beta when you wear it, you found ki shirt size is not proper and same color is not available. Now you visited again. You told me, sir, please take this in return. This shirt is not, yes, beta, is not fit, fitting is not proper. So you return that shirt. Okay. Now my policy is very clear. I do not have same shirt in different size. So my policy is very clear. I won't return you money. You can either purchase some another shirt or you have to wait for some time to have same color. After that, you thought ki, yes, sir, new collection is not there. So I will visit your premises after 1 month. Okay. So till that time, you return me that shirt and I have issued one note. So for me, this is a sales return. So Sanket sir ke liye that is sales return. And sales return. So which note I'm going to issue you in case of sales return? So remember, it's a credit note because I want to pay you. Either I want to pay you or second one, I will give you one shirt of another beta of same, not same size, same color, different size, or you can purchase any other shirt after new collection. So it's my liability. How to recall this? Company secretary.
credit note for sales return. And beta purchase return. For purchase return, I'm issuing debit note. Okay. So DP, debit note for purchase return. Beta DP, yes. और PD, पेन ड्राइव भी याद रख सकते हो. DP और PD. ठीक है. So credit note for sales return. Credit note for sales return. Write down. And purchase return के लिए debit note. So this is the important point. This is only for general knowledge. Which note? Credit note and debit note in case of return. Better write down unit 5. Unit 5, cash book. Cash book. Write down cash book. Last unit. And after that you have rectification. But I will issue क्रेडिट नोट. सेल्स रिटर्न बेटा रितु याद रखना, सेल्स रिटर्न में मैं जो नोट देता हूं ना, कि मैं आपको क्या बोलूंगा कि सर मेरे पास अभी मैं पैसा तो रिटर्न नहीं करेगा, तो रितु मैं आपको शर्ट बाद में दूंगा, या आप दूसरा शर्ट ले लेना जब नया कलेक्शन आ जाएगा. तो रितु आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए बेटा क्रेडिट नोट. देखो दुकानदार नोट इशू करता है, कस्टमर नहीं इशू कर सकता. चलो ये नोट लो करके, यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो इशू करेगा. तो मैं कौन सी नोट इशू करूंगा? संकेत सर इशू करेंगे. कौन सी नोट? मैं शॉपकीपर था और आप कपड़े लेने वाले थे. ओके, यू आर कस्टमर. तो मैं जो इशू करूंगा वो क्रेडिट नोट होगी. आप नहीं मुझे कुछ इशू करोगे. ये लो सर एक नोट, हाँ बाद में देखना, ऐसा नोट नहीं होता है. ओके, सो क्रेडिट नोट मैं इशू करूंगा. मेरा आपने रिटर्न किया है तो मैं बोलूंगा वो सुनना पड़ेगा. आप एक तो मेरा इसमें लिखा रहेगा रिटर्न पॉलिसी इज नॉट देयर, फिर भी मैं आपके ऊपर वहां पे क्या बोल सकता हूं कि ठीक है मेरे कंपनी की पॉलिसी नहीं है रिटर्न करने की, फिर भी मैं आपको एक क्रेडिट नोट देता हूं, बाद में 1 महीने के बाद आके जाइए. ओके, सो कैश बुक. राइट डाउन. यस, वेरी गुड बेटा मोहम्मद. चलिए, श्रुति पाठक ने फनी चेहरे भेज दिए हैं. वेरी गुड. नहीं तो कल उठ के बेटा रितु बोलेगी सर ये लो नोट. हाँ, आप कौन हो? आप पहले तो मैं बोलूंगा मैं वैन हुसैन हूं, आप तो एक कस्टमर हो. समझ में आया? चलो ठीक है. कैश बुक. राइट डाउन. सिंगल कॉलम, न्यू पेज पे लिखे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, लास्ट डे रिवीजन 100 पेजेस नोटबुक, ट्रिपल कॉलम. बेटा सिंगल कॉलम में ओनली कैश अकाउंट, इट मींस डिस्काउंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट prepared separately. Prepared separately. Okay. So in single column, discount account and bank account prepared separately. Chalo. Which notebook beta? You are writing in which notebook? Every one of you. Next. Cash account and discount account. तो डिस्काउंट अकाउंट को दो साइड पे लिखिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट इज अलाउड एंड क्रेडिट साइड इज बेटा रिसीव्ड. डोंट बैलेंस इट. डोंट बैलेंस डिस्काउंट अकाउंट. यू कैन बैलेंस कैश अकाउंट, कैन बी बैलेंस्ड. कैश अकाउंट बैलेंस.
कैश अकाउंट को बैलेंस कर सकते हो, डोंट बैलेंस डिस्काउंट अकाउंट. यस, वेरी गुड. 100 पेजेस की बुक में. एंड लास्ट वन. In next session, we are going to solve subsidiary books के problems and cash book के problems other than study material questions. So for study material question, you can refer my 16th July वाला lecture, और cash book का one session is there. I don't know exactly because that was the recorded one. So you can find out that session, cash book, Sanket sir's cash book करके, you will get the this. Yes, beta. No, beta, discount allowed and discount received are two separate accounts. Discount allowed की total we take it in P&L, and discount received की total we take it in P&L credit side. So we never net off, उसको क्या बोलते हैं, merge, net off discount allowed and discount received column. That is the logic. Triple column, cash account, then discount account and bank account. Okay, here bank account separately. Bank account here is separately in double column. And remember, cash deposit and cash withdrawn from bank is denoted as C. C stands for contra entry. So this is last day revision notes. Cash account, discount account, and bank account. Now, beta, you will ask me why this chapter. Whenever you are starting with any unit, you can ask me, sir, why this unit? Subsidiary book. See, journal is a basic posting transaction. Ledger, without ledger, we cannot do analysis of accounts. Means total we won't get. Subsidiary book, sir, it is an option to journal entry. So fourth one, cash book. Fourth one is cash book. And what is fifth one? Rectification. Okay. So every unit has its own importance. So cash book भी अपना एक importance लेके चलता है. Now, why cash book? Understand. Suppose, अच्छा, contra entry लिखा सबने? Yes, over, writing over बेटा. Writing over. मोहम्मद खान, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये इसलिए हम लोग इकट्ठा नहीं करते क्योंकि डिस्काउंट अलाउड ये P&L के डेबिट में जाता है पूरी अमाउंट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ये P&L के क्रेडिट में जाता है. आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं मर्ज कर सकते? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड ये डेटर देता है, डेटर को हम लोग देते हैं, इट्स लॉस. एंड क्रेडिटर से जुड़ा होता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. तो डेटर क्रेडिटर अलग अलग है, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्यों मर्ज कर रहे हो? आया समझ में? जो डेटर्स क्रेडिटर्स अलग अलग है, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्यों मर्ज कर रहे हो? ये उसका लॉजिक है. समझे क्या? ठीक है. नाउ okay, now understand. See, I will tell you the logic of this chapter. Logic. So those students who want to write logic, they can write it. See, I sold goods to you ₹100. मैं तो इधर नाम लिखता हूं. I sold goods to Mona ₹100. Okay, I sold goods to Mona ₹100. ठीक है. मोना अकाउंट डेबिट टू सेल्स. मोना अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंट्री. नाउ
See, Mona paid rupees 40 in cash and 55 in check and 5 rupees discount. See the entry now. Entry is cash account debit, bank account debit, discount account debit, discount allowed account debit. This is my loss to Mona. 40, 55 and 5. 100 is credited. Are you writing now, beta? Are you writing it now? I sold goods to Mona, Mona to sales. Mona paid rupees 40 in cash, 55 in check and 5 rupees discount. Now, single column. Assume single column. I will prepare cash account. I will prepare bank account. And I will prepare discount account. So I have to write to Mona 40. Again, I have to write to Mona 55. And again write to Mona 5. So what a single column mein I have to write 3 times. How many times? 3 times. But see, if triple column beta, date, particulars. No, not particulars. It's a receipt side. It's a receipt side. Receipt, discount column, then discount allowed hai, cash, bank, and same you have to write on credit side, date, payment, discount received, cash, and bank. And I have to write only once to Mona, discount allowed 5, 40 and 55. Now you only tell me which is better one for accountant. And you can easily reflect in one transaction. Here you cannot see how much discount is given, how much cash received by from Mona. I cannot find out that. But here I can easily find out in last payment, Mona took discount of rupees 5. She paid 40 rupees in cash and she paid 55 rupees in check. So I can easily trace the transaction, and that is the help of triple column. So now you only tell me which is better one. Single column, 3 times you have to write Mona, or triple column. कौन सा 3 बार लिखना? कौन बोलेगा भाई 3 बार लिखो? इसमें तो एक में ही समझ में आएगा कि 5 रुपया डिस्काउंट दिया मोना को, 40 रुपया कैश में लिया, 55 रुपीज, तो 100 रुपए के बदले में कैसा कलेक्शन हुआ ये आपको एक ही ट्रांजैक्शन में दिख जाएगा. तो बड़ा ऑब्वियस ना, ये पुराने मुनिम जी क्या येड़े नहीं थे बेटा, बहुत भारी बना देते अकाउंट्स. वो इजी टेक्निक्स देते थे. तो वो अलग अलग बुक बनाने का, अकाउंट मत रखो बोलते थे, कैश अकाउंट अलग रखो, बैंक अकाउंट नहीं. रे भाई क्यों, जरूरत क्या है, एक ही में निपटाओ ना. मोना एक ही बार लिखना है आपको, टू मोना 3 बार क्यों लिख रहे हो? हाँ. So this is the logic of cash book. This is the logic of cash book. Easy, Jay? But everything is logical. Everything is logical. First thing कि आप ये पूरा जो अकाउंट सीख रहे हो. Now see, this is because of software. You are not going to learn this triple column, double column, single column. But when there were no computers, at that time, no softwares, at that time, beta, this is how you are writing your books of accounts. And that we have to understand it in the foundation. Bookkeeping. Okay. See the word bookkeeping, how to keep books of accounts. So these are various techniques to maintain your books of accounts. ठीक है? So ये था आपका कैश बुक. Now everyone clear with the logic?
Clear with the logic? Yes. Instead of writing three columns, three accounts separately, we are opening only one account and three different columns. So it will save my time. And for more clarity. Easy है. Okay, Shruti ji. Yes, बेटा पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो महक रॉय, बट इंस्टेड ऑफ दैट रिसीट एंड पेमेंट लिखना ज्यादा आप प्रायोरिटी देना. हियर यू कैन राइट पर्टिकुलर्स, बट इंस्टेड ऑफ दैट मोर क्लैरिटी फॉर रिसीट एंड पेमेंट. रिसीट आया तो डेबिट एंड पेमेंट आया तो क्रेडिट. नाउ अंडरस्टैंड पेटी कैश बुक. सेकंड बुक बेटा, राइट डाउन पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक but it is also called as red pen, also known as impressed system. See, the word is impressed system. This system is called as impressed system. Now, why the word? आपका नाम बड़ा शुभम क्यों है या श्रुति क्यों है? नहीं, तो ये नाम है. बेटा कोई भी चैप्टर when I start, first I am telling you the logic behind it. Okay, without logic कभी भी कुछ सीखना ही नहीं है. इन लॉ ऑल्सो एंड इन इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट्स. मैथ्स में मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैथ्स रटो पास हो जाओ. हाँ, अब है उसमें भी लॉजिक, स्टैट्स में बहुत लॉजिक्स है, बट मैथ्स में बेटा मैं खुद नहीं बोलूंगा. हाँ, बट दो सब्जेक्ट्स विच यू रिक्वायर इन द फ्यूचर, लॉ होगा, इको होगा, प्लीज लर्न इट लॉजिकली. Ask to yourself, why this? Why this? Okay, so petty cash book, also known as impressed system. Now, what is petty cash book? Petty cash book means small cashier. Okay, is not main cashier. Who maintains it? Small cashier maintains cash account. पेटी कैश अकाउंट, नॉट कैश, इट्स अ पेटी कैश. पॉकेट मनी होता है ना आपका, वैसा. मेन कैशियर इज योर पापा, डैड. आई होप सबके घर में बेटा पापा ही मेन कैशियर होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. हमारे घर में उल्टा है, मम्मी है मेन कैशियर. अपन के पास तो पैसा ही नहीं रहता बेटा. हाँ, मैं पॉकेट मनी मांगता हूं तो remember, small cashier maintains petty cash. Okay, so I'm a small cashier. जेब में साल भर की इनकम बेटा 1000-2000 रुपया. ओके, सो स्मॉल कैशियर मेंटेन्स पेटी कैश, पॉकेट मनी जैसा. एंड देन यू हैव टू राइट ऑल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस. आई विल शो यू द प्रो फॉर्मा, सो इट विल बी वेरी लॉजिकल फॉर यू देन. यस, श्रुति बोल रहे हमारे घर में भी मम्मी कैशियर है. वेरी गुड बेटा. चलो, सी receipt of ₹100 petty cash book, you can see here. And then cashier, petty cashier, he gives you conveyance का पैसा. Then see cartage, conveyance and cartage. Cartage is of goods and conveyance is for बेटा person, जो वो उधर इधर आता रहेगा. ऑफिस बॉय का जो पैसा लेता रहेगा पेट्रोल का, तो दैट इज कन्वेंस. एंड कार्टेज फॉर, नॉर्मली कार्टेज इज फॉर गुड्स. तो गुड्स उतारने के लिए वो उसके पास हमने पैसा दे के रखा है. देन बेटा स्टेशनरी, ओस्टेज, वेजेस एंड सनरीज. So these are expenses which he incurred from this petty cash, and these different columns you have to prepare. So what are columns beta? Write down columns. Receipt. Write down columns. Receipts. Date. Then you have voucher number. V number means voucher number when he incurred. So we will ask him for bhai sahab voucher do, Xerox ka bill do. Okay, so that is called as voucher number. Then particulars,
और पेमेंट्स लिखो इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर्स लिखो, चलो पर्टिकुलर्स, एंड लास्ट में बेटा डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, डिफरेंट एक्सपेंडिचर हेड्स, different expenditure heads. Okay, so this is a petty cash book. I have given you everything in writing. 100 पेजेस की नोटबुक भी आपको बनवा के दे दी मैंने. मेरे साइड से अभी कुछ भी नहीं बचा है. बहुत अच्छे से मैंने आपको थ्योरी भी लिख के दिया. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू वॉच माय प्रीवियस सेशंस, कंप्लीट योर वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ इलस्ट्रेशंस. सो इलस्ट्रेशंस के लिए पिछले सेशंस को देखिए. इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ रेक्टिफिकेशन एंड बेटा रेक्टिफिकेशन प्लस कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स के प्रॉब्लम्स. सो नेक्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट. सो वी आर गोइंग टू मीट ऑन थर्सडे. नाउ थर्सडे, थैंक यू. सो एक दिन जल्दी छोड़ रहा हूं आपको, 1:15 को नॉर्मली छोड़ता हूं. एंड कंप्लीट दी होमवर्क. तो होमवर्क में क्या क्या है? होमवर्क प्रीपेड एक्सपेंस एग्जाम्पल, सेकंड वन होमवर्क में व्हाट आर यू गोइंग टू डू बेटा? प्रीवियस सेशंस एंड 400 पेजेस में आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग विथ इंडेक्स. हाँ बेटा, विथ इंडेक्स. यस, निधि यादव कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा. यू ट्राई टू फाइंड आउट दिस. ओके, यू ट्राई टू फाइंड आउट. चलिए, सो होमवर्क मैंने दिया है, विथ इंडेक्स कंप्लीट कीजिए. ये प्लीज कंप्लीट इट. प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्रीवियस सेशंस प्लस 400 पेजेस में आंसर राइटिंग प्रॉपरली लिखा हुआ चाहिए, आंसर्स एवरी वन ऑफ यू. चलिए, थैंक यू, बाय बाय. बंद कर दीजिए.